Okay, so now as we just try to understand how that distance, from the distance how we will get that velocity. So here we have one maths topic that we call as a differentiation. Here this topic that we study in the 12th standard, but for a physics it's required here to understand how we will get a velocity with the help of a distance and how we will get an acceleration with the help of a velocity. So as here the differentiation, so differentiation you can consider in a simple terms to differentiate. Here we have a simple formula for a differentiation. Observe carefully. d by dx of x raised to n. Here we consider d by dx of x raised to n, that whatever that power comes forward, and then that will subtract 1 from the power. So differentiation basic formula is d by dx of x raised to n. It means here we are differentiating the x raised to n value with respect to x. So whatever that power that comes forward, and now you can subtract 1 from that power. For example, अगर हम यहाँ पे देखें कि d by dx of x cube. So how will you try to differentiate? जो भी power है वो आगे आएगा, means 3 comes forward, x as it is, और जो भी value है that's the 3 minus 1, so that is equivalent to 2. एक और step आप ज्यादा कर सकते हैं. You can take in a simple way addition as well as subtraction. For example, ऐसा हम कह देते हैं कि 2x square plus 4x plus 1 is equal to what? So here that 2 in that power comes forward and that will multiply with this 2. So that's the 2 2s are 4. Here x having a 2 power, so that becomes only 1 power plus sign. Here we have that 4x. So this 4 as it is. This x having a 1 power, so 1 x raised to 0. But x raised to 0 is a 1 at least. Plus, here it is a 1 itself only. So that is x raised to 1. That 1's come forward and that becomes constant. So here this 1 value give us 0 value. So final differentiation is 4x plus 4 only. You can try one more. For example, if I take with respect to time dt, here I have something like this. 3t square minus 5t plus 10. So 3t square, that t square, that 2 comes forward, that becomes 2t, and it's a 3 here. That is 6t only. That's 3 to the 6t minus 5t, that's a 1, and 10, that's a constant. So differentiation of constant is a 0. That is also important point. Differentiation with respect to x or t, whatever, but the differentiation of constant, that value is 0. And now you understand, in the case of instantaneous velocity, here we have the value x is equals to 1.5 t square. So if I take the differentiation with respect to time, that value is 1.5 t square. Now you tell me, what is the differentiation of 1.5 t square? That 2 comes forward, so that is a 3t. Now check that all the values, as you take a t different values as a 0, the first value is 0, t1, that first speedometer value is 3, 2, that's the sixth value, t3 second, so that becomes 9, and so on values. So here that x is a displacement, and as I take a differentiation with respect to time, so that becomes a velocity. In detail we will also discuss in next topic also. Now here some differentiation formulas, something like this, d by dx of sin x. Actually ये formula आप पूरे 11th में भी काफी जगह पे यूज करोगे, 12th में भी आएगा, but as you are a math student or a bio student, मैथ स्टूडेंट हो तो 12th में आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, और बायोलॉजी वाले तो कहीं पे नहीं पढ़ने वाले हैं. सो बेस्ट थिंग इज दैट अब इसे थोड़ा आइडिया ले लो, सो दैट विल बी गुड फॉर यू. वो फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे काम में आएगा. सो डिफरेंशिएशन, दैट्स द डी बाई डी एक्स साइन एक्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू cos x
तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, बट डिफरेंशिएशन ऑफ cos x that is a minus sin x. अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर देते हैं. If a differentiation of sin px where p is considered as a coefficient of x, so whatever that coefficient take it forward, आगे लिख लो. sin का क्या होता है cos, तो इसको ले लो cos and that's a px at least, so that is a px as it is. Differentiation of cos px, so again cos px, p आगे आएगा with minus sign और cos का हो जाता है माइनस साइन, तो साइन तो ले लिया, sin px only. इतना पता होगा आपका काम आसान है. सेम लाइक दैट यू आर जस्ट डूइंग अ रिपीटेशन. d by d theta sin theta, so that is equals to cos थीटा. थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स आएगा. स्मॉल क्वेश्चंस. डी बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9, सो डिफरेंशिएशन 6t प्लस 5. इफ आई से दैट टेक अ t इक्वल्स टू 2 सेकंड, वैल्यू लगा दो, आंसर मिल जाएगा. सम वैल्यूज फॉर होमवर्क. d by dx 4x cube minus 3x square minus 4x plus 5. Here 5 is considered as a constant, x having one power, x square and x cube. Try at home. And one more question. d by dt 3t cube minus t plus 10. So 2 questions for homework. So I hope this much of differentiation part is very clear. Now here same like differentiation, here we have one more point, it's called as a integration. So now differentiate करना उसका मतलब होता है divide करना. इंटीग्रेशन मतलब टू इंटीग्रेट, उसका मतलब होता है ऐड करना. तो डिफरेंशिएशन में जो होता है उसका थोड़ा बहुत उल्टा ऐसा माना जाता है. मतलब यहां पे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, जो अभी हम देखेंगे. पर यहां से ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा. डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. आगे के सेशन को अच्छी तरह से अगर आप समझोगे तो और मजा आएगा. बिकॉज हियर दे डिफरेंशिएट दैट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. कि अगर मैथमेटिकली करना हो तो किस हिसाब से करना है, ग्राफ के बेस से करना हो तो किस हिसाब से करना है. तो जैसे डिफरेंशिएशन में जो भी पावर था वो पावर आगे आ रहा था और पावर में एक कम हो रहा था. इंटीग्रेशन में थोड़ा उल्टा है. सो हियर इट शोज दैट फॉर इंटीग्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. सो नाउ हियर फॉर इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n, ये जो सिंबल है टू dx, दैट इज कंसिडर्ड एज ए इंटीग्रेशन फंक्शन. इंटीग्रेशन x रेज़ टू n. सो x रेज़ टू n का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x only. सो हियर वी कैन से वॉट एवर दैट पावर, एड 1 in that, divide by, take that power as it is. For example, integration x raised to 3 dx, the simple way, x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1. So that becomes x raised to 4 by 4. Same rule you can apply here for addition as well as subtraction. जैसे एक का होता है वैसे सबके लिए हो सकता है. Integration t square plus 2t plus 5 dt. यहां पे पूरा इक्वेशन t के फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन भी t के फॉर्म में करना है. So now here t square t cube upon 3 plus 2t है तो वो बन जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस
5 and here 5 is a constant. तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो उसके लिए ऐसा सोचना है कि भाई 5 है तो उसके मल्टीपल में t रेज टू 0 तो है ही, तो t रेज टू 0 हो तो आई जस्ट ट्रीट लाइक दिस 0 प्लस 1 अपॉन 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जिसके टर्म में हम ले रहे हैं वो वैल्यू आएगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू dx वो x बन जाएगा. ताकि कांस्टेंट है उसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन, मान लो कि मैंने 5 ले लिया एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है उसका मतलब ये हुआ x is to 0 बिकॉज एनी वैल्यू हैविंग a power 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, x is to 0 इंटू dx ले लिया तो 5 तो एज इट इज आएगा ही आएगा, बट x is to 0 का क्या होगा, x is to 0 प्लस 1 अपॉन 1, सो दैट इज 5x. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो जो नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा, पर x is to 0 की जगह पे x आ गया, यहां पे t के टर्म में, इसलिए वो t आ गया. तो फाइनली आई कैन राइट इन दिस वे, दिस 2 विल कट, एज सिंपल एज दैट. इसमें एक और चीज ऐड होती है दैट इज कॉल्ड एज द लिमिट्स. हियर दैट वी कंसिडर एज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. उसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. If I consider integration limit from 1 to 3, suppose there is a t square plus t dt. So as you have to treat as a simple integration, that t square, so that becomes t cube by 3 plus t square by 2. And now here it is a lower limit and this is a upper limit. अब सुनना, रूल ये कहता है for integration, first of all place upper limit because here t is considered as a variable. So first of all place upper limit minus lower limit. तो कुछ वैल्यू इस तरह से बनेगा 3 cube upon 3 plus 3 square upon 2. First of all, I just place that upper limit. Now minus sign. Now place lower limit. 1 cube upon 3 plus 1 square upon 2. So as I just get the value, here you have that answer. It's very, very simple. So 1, 3 will cut. So 3 square 9 and 3 square 9 by 2, that's a 4.5. So 9 plus 4.5, so that is ultimately 13.5 and minus this is 1 by 3 plus 1 by 2. So as I get the value, that is the sum answer of this question as you place upper limit and lower limit. Here we will take one more example, something like this. Suppose x plus 1 into dx. If I take the limit from 0 to 1, now what? Integrate first of all. Integration of x square by 2 plus x only 0 to 1. As you think about the limits, first of all upper limit minus lower limit, 1 by 2 plus 1 minus 0, so that remains 0 only. So 1 by 2 plus 1. That is 3 by 2. That is the answer. And now here, जो डिफरेंशिएशन में होता था यहां पे उसका उल्टा होगा. मतलब कैसे, जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरह से देखने की, समझने की ट्राई करना. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, दैट इज a cos theta. Differentiation of sin x is a cos theta. और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स. अब उसका उल्टा लेना है, मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स दैट इज साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन दैट इज अ कॉस. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx which is a sin x. And if you remember it, differentiation of cos x, that's a minus sin x.
differentiation of cos x, that is a minus sin x. So, integration of sin x, it is a minus cos x. It is a little bit confusing, पर जितना clear रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. How can you use limit here? For example, from integration 0 to pi, sin theta d theta. So, integration of sin theta from 0 to pi value. Integration of sin theta, that is a minus cos theta. Now, again, place upper limit minus lower limit. So, minus cos pi minus cos 0. So, here from a unit circle, you know it very well, cos pi value itself is minus 1 and minus 1, plus 1. This minus and minus also plus, and cos 0, it is also 1, that is equivalent to 2. So, I hope you understand that the use of differentiation and integration. If you know this basic formula, integration of x square, integration x raised to n dx, that is equivalent to x raised to n plus 1 upon n plus 1. And here you have advantage, कभी भी फिर भी डाउट होता है तो फिर से आप ऑन करके रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशंस आर मोस्ट यूजफुल इन फिजिक्स. जहां जहां पे डाउट क्रिएट होगा डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही रहा होगा. तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है और यहां पे है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन x रेज़ टू n इज इक्वल्स टू n x रेज़ टू n माइनस 1. तो जितना आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ये बेसिक्स क्लियर होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा.